automatic restoration for the provisional attachment of property by the commissioner under section 83 of CGST Act, read with rule 159 sub rule 2, whenever any commissioner is of the opinion to protect the government revenue, he pass an order for provisional attachment of property under section 83 of CGST Act, and that order is valid for 1 year as per the provision. But we have seen lot of litigation in the trade that even after 1 year that is continued, hence creating a problem. So GST Council has recommended now DRC 22, form DRC 22, which is being used for provisional attachment of property, shall not be valid after 1 year. So by default, maximum time period would be 1 year. So you need not require to take any special permission. After 1 year, this provisional attachment order gets vacated. अगर आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया गया है अंडर सेक्शन 83, रेड विथ रूल 159 सब रूल 2, वाइट फॉर्म नंबर GST DRC 22, जो 1 साल के लिए वैलिड होती है। लेकिन हमने देखा कई केस में 1 साल से बियॉन्ड ये प्रोविजनल अटैचमेंट का चलता रहता है, और कई हाई कोर्ट के जजमेंट हैं कि 1 साल से ज़्यादा ये वैलिड नहीं है। तो उन्होंने अब ये कह दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास होगा वो 1 साल से बियॉन्ड वैलिड नहीं होगा, यानी आपका 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। आपको अलग से कोई कमिश्नर से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है।